Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So what I'll be doing, I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content of the news with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 6th of April. The first topic is bilateral ties between India and Russia. Second, law allowing Russia president to rule till 2036. Third is Panacea Biotech to manufacture Sputnik 5. This is a vaccine from Russia. Second last topic is manufacturing PMI dips to 7-month low. And the last topic, this is an editorial that talks about free and unhindered justice, right? So these are some of the important news article and editorial reported in today's newspaper. Apart from all the discussion, at the end of this video, I'll be discussing some MCQs question that is definitely going to help you for the prelims examination, because the question that would be asked would be from current affairs only, right? So make sure you stay tuned till end of this video. Now moving with the news first, that is the bilateral ties between the India and Russia. So in order to improve the relationship between India and Russia, there is something which is coming up between the foreign level meet, and the foreign minister of Russia, Mr. Sergei Lavrov, he's there on India. So we'll see what are the important point that is there on the agenda. And talking about the relevance, this is important for your general studies paper 2 in the bilateral regional grouping agreements involving India's and affecting India's interest. So as it is evident from the news that the Russia foreign minister is on a 2-day visit to India, and this would be a bilateral visit which would be covering a lot more areas and a lot more agendas. Now the visit would present an opportunity to discuss the aspect of bilateral ties. उसके अलावा जो रिव्यू प्रिपरेशंस हैं, चाहे वो इंडिया रशिया के बीच में जो एनुअल समिट्स होनी थी जो ऑलरेडी डिले हो गई थी, जो पेंडिंग है, दिस इज ऑल्सो इन लाइन ऑफ दैट ओनली दैट इंडिया एंड रशिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर relationship. Now, concerns over line of actual control, because in this meeting, India has raised several concerns with regards to line of actual control. Being like a good relationship with Russia and China, India want कि यहाँ पे एक facilitator या mediator का काम Russia भी कर सकता है. So the meeting will provide India with a window to share the frank assessment about the continuing scenario in the Eastern Ladakh. जो line of actual control के पास जो escalation हुई थी between the India and China. So India is involving Russia to make sure that the Russia as a country is equally evident about the ground situation. Now Russia के जो foreign minister है, he has visited China in March, where both countries put a joint efforts against the United States. तो रशिया और चाइना दोनों मिलकर यूएस को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट यूएस एंड इंडिया, द रिलेशनशिप is good, it's a great, so we do not have any problem from the United States. But at the same time, when there's a relationship that is established between the Russia and China, India want that Russia should pressurize China to ensure that line of actual control should be completely make neutral and stability should be prevailing in that particular area. Now, if you talk about precisely about India, India on other hand has called up China to withdraw the remaining friction point, because yesterday also we discussed that news where they have said, the Chinese authorities have said that the negotiation and agreements are the only option that is left between India and China, right? तो वहाँ के जो envoy थे, China envoy to India, so he said some official point and he has officially clarified his views on the line of actual control. तो LAC के जो following spirit और disengagement है that need to be achieved at Pongso to Lake Arle, right? So these are some of the core areas upon which India want the attention of Russia as well, and India is also looking forward कि रशिया के साथ भी खास करके चाइना जो है उसके साथ प्रॉपर एंगेजमेंट हो और रशिया उस चीज को एड करे. दे शुड प्रोवाइड बैकिंग टू इंडिया. Now, missile defense system की एक बात करें, in order to augment our defense system, India has always been dependent on Russia. We cannot say dependent. I mean, it is like it is more in a collaborative efforts between India and Russia that India has always been strengthening their defense ties, right? So, in order to expect features in talks pending before that,
रशिया की जो S4 मिसाइल सिस्टम है दैट इज़ वेरी एडवांस मिसाइल सिस्टम दैट इज़ कमिंग टू इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ विच जो यूएस की जो काटसा है काउंटर, दिस इज काटसा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में भी पढ़ लें। काटसा स्टैंड फॉर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्स थ्रू सैंक्शन एक्ट। जो S4 सिस्टम मिसाइल सिस्टम इंडिया ने परचेज किया रशिया से, उसके बाद यूएस ने इंडिया में काटसा लगाया हुआ है, एंड काटसा इज एन एग्रीमेंट विच सैंक्शंस कंट्रीज विच हैव अ मिलिट्री रिलेशनशिप विथ Russia, China, and Japan. So India is expected to receive first S4 missile system later this year, and the delivery may attract US sanction under the CATSA. So make sure आप CATSA के बारे में उसके जो inner points हैं वो पढ़ लें, because prelims में this can be important. Now focus on the peace efforts in Afghanistan, because recently the American government has come up with a decision that they would be withdrawing their troops from Taliban and Afghanistan region. So the Russian foreign minister visit would focuses on the peace efforts that is ongoing in Afghanistan, और इंडिया की एफर्ट्स ये है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी बनाया जाए, ताकि जो तालिबान के जो लोग हैं, जो पावर शेयरिंग होनी है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, नहीं तो उस वैक्यूम को पाकिस्तान या फिर उसके आसपास के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो रशिया फॉरेन मिनिस्टर वुड बी अकम्पनीड बाय द मॉस्को स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान, और ये बताई गई है कि जो प्लानिंग है विथ रिगार्ड्स टू द पीस प्रोसेस दैट इज अंडर वे इन अफगानिस्तान. सो रशिया हैज अगेन कम एज एन एविडेंट पार्टनर in terms of providing stability in Afghanistan and Taliban region. और मॉस्को की स्पेशल एनवॉय जो है उनकी अगर बात करें, सो द प्रेजेंट डिस्कशन वुड प्रोवाइड फॉर अ हैंड फ्री ब्रीफिंग ऑन द लेटेस्ट रशिया मूव इन द अफगानिस्तान, राइट. So power sharing is again one of the biggest tasks and a hurdle for Afghanistan government as well, because they don't want to continue with this, but they are of the opinion कि power sharing होनी चाहिए in democratic setup, and also with regards to the election they are planning कि जो अफगानिस्तान है और जो तालिबान का रीजन है उसमें इलेक्शन के थ्रू पावर शेयरिंग को स्टैब्लिश किया जा सके, ना कि डायरेक्ट पावर शेयरिंग के लिए, राइट. सो अफगानिस्तान पीस इशू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर मेंस एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर आप उसके लिए सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट कर रहे हो. Now coming to the other news, that law allows Russia president to rule till 2036. So this is a complete different setup that is coming from Russia, and this can be important for your general studies paper too, that is effects of policies and politics of development in the developing countries. So what has happened in Russia कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, दे हैव साइंड अ लेजिस्लेशन, एक लॉ को उन्होंने पास किया है जो कि अलाउ करती है वहाँ के प्रेसिडेंट को टू कंटिन्यू इन पावर टिल 2036. सो रशिया प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 6 साल के लिए होती है. सो दिस वुड बी द 2 टर्म ही वुड बी कंटिन्यूइंग, राइट. So this is something his tenure is going to expire on 2024. तो 2024 तक तो उनकी सीट सिक्योर है, but if you add 2024 plus 12, right? So this is plus 12. If you add plus 12 here, so this would be coming up to 2036, right? So this is for the time duration that president would be continuing his presidentship, right? तो एक legislation पास हो गई है जिसको आप withdraw नहीं किया जा सकता है. सो द प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे खास करके अगर बात करें व्लादिमीर पुतिन की, सो दैट इज इन पावर फॉर मोर देन 2 decades. इट इज नॉट अ न्यू वन. ही हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर पास्ट 20 years, राइट, 2 decades, and required to step down as a second consecutive term by 2024. He was about to step down. उनको इस बार resign करना था, but power is something which make people comfortable every time when they're in power. So a law and legislation has been passed in Russia to allow the president Vladimir Putin to continue till 2036. So this is the core essence of this news. आप इसको समझ लें, टर्म समझ लें कि 2024 तक के लिए है, अभी प्रेजेंट में है. His terms is expiring in 2022. By adding 12 year, this comes up to 2036. और जो अमेंडमेंट अप्रूव की गई है रशिया में, दैट इज अ नेशनल वाइड वोटिंग हुई, ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती इसको किया गया, एंड दिस अलाउ दैट 2 more 6 consecutive year for the presidential term. And amendment were passed by the state Duma. State Duma का मतलब है जो लोअर हाउस होती है रशिया की फेडरल असेंबली की, उसको स्टेट डूमा कहते हैं. तो मेक श्योर आप ये भी समझ के रखें, क्योंकि कई बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अलावा और किसी दूसरी चीज़ें में भी आपसे चीज़ें
पूछी जा सकती है, राइट. So late March only they have decided कि they have passed the amendment to continue president till 2036. Now, constitutional amendment की अगर बात करें, so nearly 78% of the voters approved the constitutional amendment followed a balloting, right? तो बैलेट पेपर्स के थ्रू वोटिंग की गई जिसमें 78% वोटर्स ने अलाउ किया इसको, एंड द अमेंडमेंट रिप्रेजेंट अ मेजर ओवरऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. Oppositions forced and accused Russian president of abuse of power and introducing them. तो अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह से ये पावर की मिसयूज की जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज कंटिन्यूइंग फॉर पास्ट 2 decades, राइट, 20 ईयर से कंटिन्यू है, और अपोजिशन का कहना है कि ही हैज बीन ट्राइंग to he has been trying to make a law which is completely in his favor without taking the consent of the opposition. Now if Putin is re-elected twice and then he would be serving as a second term, और ये एक बहुत ही लंबे अंतराल पे देखा जाए तो जो जोसेफ स्टेलिन थे, he has become the Russian president who was in power for basically 42 years, right? And if he would continue, his tenure is going to be far ahead than what the previous president was, right? So this is something, a very important constitutional amendment coming up in Russia, which is not possible in India. India में कभी ऐसी चीजें नहीं हो सकती है because we are the democratic country and the change of power occur every 5 years in India, right? So comparison अगर पूछा जाए या फिर if this is in news, a question can be asked कि Russian constitution से क्या क्या चीजें ली गई है. So if you know what we have taken from Russian constitutions, do write that in the comment section. I'll be more than happy to see how many of you know the answer. Now coming to the third news, that is Panacea Biotech to manufacture Sputnik 5. So considering the fact that the COVID-19 cases are increasing in India, the government has given an emergency approval to manufacture Sputnik 5 vaccine, and Panacea Biotech is a firm from India itself. So this is important for your issues related to development and management of health. So a vaccine firm, Panacea Biotech, that is from India, they headquartered at New Delhi, and they have said that will be jointly growing the list of Indian pharma to manufacture or to produce the Russia Sputnik 5 vaccine, which was the first vaccines to be approved in the world. Russia ने सबसे पहले इसकी approval दी थी, and as per the Russia Sovereign Wealth Fund, जो RDIF है, Russian Direct Investment Fund है, this is the organization which is funding the all मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पुतनिक 5. तो सारी इन्वेस्टमेंट जो है, जो फंडिंग है, वो ये कंपनी कर रही है. तो वो रशिया बायोटेक को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि दे वांट 100 million doses of Sputnik 5 by per year, right? And this would be the fifth such partnership with a vaccine maker in India. We already have some vaccine manufacturers like Dr. Reddy, Serum Institute of India, Bharat Biotech, right? So these are the important manufacturer that is coming now. Panacea Biotech is something which has joined the row. Now RDIF की अगर बात करें, so this is Russia Direct Investment Fund. They did not mention when the firm is likely to begin the production of 2 doses antiviral vector. अभी second doses की बात नहीं की गई है क्योंकि जो first dose है उसकी efficacy 91.6% के आसपास थी. Now the official statement coming from RDIF, उन्होंने कहा कि जो Sputnik 5 की जो vaccines है that would be manufactured by Panacea Biotech would facilitate the global supply of the vaccine, and international partner would also be generated or created. So this is equally important कि domestic manufacturing के लिए तो है ही important, because globally also these company like Serum Institute of India, Covaxin, I mean Bharat Biotech, Dr. Reddy, Panacea Biotech, they would be also giving their service globally across the international other countries would be also getting benefit from this. So low and middle income countries would be also getting the benefit of the manufacturing of the vaccines. Now इमरजेंसी ऑथराइजेशन बहुत टाइम से रुकी हुई थी स्पुतनिक 5 को लेकर के, इंडिया में खास करके, प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो 59 कंट्री ने अप्रूव किया, और जो ऑथराइजेशन रुकी हुई थी बिकॉज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि एडवाइस करती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, DCGI को, उन्होंने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं था. सो दैट इज वाई द इमरजेंसी अप्रूवल फॉर स्पुतनिक 5 was pending. Now they have given it. So the regulator last week deferred the decision on grant of emergency use of the authorizations. Now it is being finally approved, and now they would be stepping up in producing as many as vaccine, like close to 100 million doses of the vaccines to supply to the international partner around the world and also in India, right?
So this is something which is again very important for the time being, because the cases are on surge, and we as an individual, we as an are contributing to the society. We need to maintain all the social distance protocol, considering that we are also wearing the mask, sanitizing our hand, and maintaining the social distance. This is something which is a need of the hour. Now, manufacturing PMI dips to 7-month low. So, as we know that after the lockdown, manufacturing sector were among the worst hit sector, and this is a sector which give a lot of employment to the country, right? So, this is important for your general studies paper 3, Indian economy and issues related to planning. सो एक लेटेस्ट सर्वे आई है IHS मार्केट, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने कहा है कि इंडिया की जो फैक्ट्री एक्टिविटी है दैट ग्रू एट द वीकेस्ट पेस्ट इन द पास्ट 7 months, राइट। पूरे मार्च तक की इसमें सर्वे की गई है, बताया गया कि पिछले 7 महीनों में सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है। Now, the latest surge in the COVID cases may further dampen the domestic demand and the output. This is equally evident. Once the manufacturing sector is not performing well, it will deteriorate and the performance will definitely downgrade. And recently, because of the government advice to the state government, they're trying to control the rapid spread of the virus, because government is coming up with some strict rules and regulation, because government has announced that still there's no planning of lockdown, but some strict action would be taken by the state governments. So some restriction is going to be imposed on the activities in the factories, and still for time being till April and May, these 2 months is going to be tougher for the manufacturing. नाउ एक्सपेंशन स्लो है, ये प्रोजेक्शन की गई थी। जो निकी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, दे हैव सेड, ये रिलीज की जाती है IHS मार्केट के द्वारा ही, and he said that it said that the decline of the 7-month low is like 55.4% लास्ट मंथ थी, और जिस इससे पहले फरवरी में 57.5% थी। तो ये फरवरी की है और ये मार्च की है। तो आप देख सकते हो दिस इज गेटिंग डिक्रीज, बट the only thing that is giving confidence is that ये 50% के ऊपर है, right? And despite the foreign orders growing faster, मार्च में देखा गया कि जो सब इंडेक्स है उसमें भी डिक्लाइन देखी गई है। ये सबसे ज़्यादा कम रही है लोवेस्ट अगस्त 2020 में, right? And the output has also grown to the weakest pace in the 7 months. So as we know, it is evident from the news itself, from the headline, कि 7th month में अभी तक की सबसे लोवेस्ट performance rahi hai. And definitely to boost manufacturing, government has come up with lot more packages, but for time being no conclusive or practical result in being shown in this sector. Now, failing predictions of economic survey, जो economic recovery है उसकी बात करें तो जो खास करके Reuters है, जो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो करेगी, अपने अच्छे पेस में ग्रो करेगी, बट no one was aware that the second wave of the COVID-19 would again continue, and because of this the prediction is failing. And a significant, and economists say that surge in the coronavirus cases is the biggest risk to the outlook, the projection that was being made. और बहुत सारे, अगर MSME सेक्टर्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग से बात करें, अगर ये चीज़ें इम्पैक्ट होती है तो जॉब कट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं इंडिया में ऑलरेडी, फैक्ट्री इंटेंसिफाइड हुई है, ले ऑफ हुई है विद strongest in the 6 month, and both input and output pricing has increased to the slower pace, signaling the overall inflation accelerated to the 3-month high February that might ease within the RBI inflation of 2 to 6%. So inflation in India is being supposed to have 4%, but because of the COVID-19 it is fluctuating between 5 to 6%. Now, this is the last news. This is basically an editorial, talks about free and unhindered justice. So it talks about Supreme Court and its access to basically the digital way of accessing to the Supreme Court is equally very important at the time of pandemic. So this is important structure, organization, function of the judiciary. So this can be used as a case study or in the essay paper as well. So ये एक आयरनी है, जिस तरह से पेंडेमिक ने चीज़ों को इम्पैक्ट किया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेयर इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस टू द सुप्रीम कोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट वेरी पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज समथिंग विच कैन पैरेलली गो। और इस टाइम पे, जिस टाइम में लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई, बहुत सारे लिटिगेंट्स ऐसे थे, लॉयर्स थे अक्रॉस द कंट्री, दे हैव टेकन द वे ऑफ टेक्नोलॉजी
to overcome the problem of the courts and relatively ease down it, right? So टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीज़ों में मदद मिली है एंड द केसेस बाय स्लोअर और हायर इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, कम या ज़्यादा दैट आर हैपनिंग इन इंडिया बोथ इन द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. नाउ इंक्रीजिंग रीच की अगर बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी. इफ यू टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में, दोनों के बारे में आपको बता दूँ. सो इवन एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज डिबेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात की गई थी कि ज्योग्राफिकल जो एक्सेस है सुप्रीम कोर्ट की, दैट फ्लैग्ड अ कंसर्न, राइट. उस समय भी ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो रीचेबिलिटी है लोगों की वो बहुत अहम है एंड इट शुड बी मोर रीचेबल टू एनी अदर कोर्ट्स, राइट. And Dr. B.R. Ambedkar of the drafting committee, he said, nevertheless, I quote him, nevertheless, of the view that court must have a specific place of the sitting for the litigants and should know where to go and whom to approach. तो बी आर अम्बेडकर ने उसी टाइम पे ये बहुत ही अच्छी बातें कही थी कि कोर्ट को ये स्पेसिफाई करना होगा कि जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, उनको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे उसको जाना है और किन को अप्रोच करना है अगर उनके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए. हमारी जुडिशरी इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी ल्यूसिड तरीके से काम करनी चाहिए. दिस इज व्हाट मिस्टर अम्बेडकर हैज टू कोट. But you see, the complexity of the court is too high in India, right? People are actually not aware how and where to appeal for their grievances. Now cases from the states, अगर बात करें कुछ केसेस के बारे में रिपोर्ट की गई है कि किन केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस हाई हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, एक डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं बोथ इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, राइट. दिल्ली में भी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काफ़ी पिटिशंस और एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं. कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें, दैट इंक्लूड वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश. दे वर कलेक्टिवली among the fifth of the India's population, contributing none less than 10% of the court dockets, मतलब जितने cases हैं, right? And on the other hand, almost 18% of the cases in the Supreme Court, जो जितने भी total cases हैं, out of total cases, 18% of the cases in Supreme Court is coming from Punjab, Haryana, right? And they share less than 5% of the total population share. तो एक ऐसा स्टेट जो अपने पॉपुलेशन शेयर में सिर्फ 5% पॉपुलेशन शेयर करता है, बट केसेस में सुप्रीम कोर्ट में 18% तक केसेस शेयर कर रही है, सिर्फ ये दोनों स्टेट्स, राइट. तो कुछ फोर्डर पॉइंट है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं उस टाइम पे. नाउ कोर्ट फॉर एवरीवन, इट इज बीइंग सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट, एंड कंसिडरिंग द पेंडेमिक, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे, सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम द फिजिकल constraint should be there, and this can only be possible when virtual court is operating in India. That is already operating, but जो justice है खास करके virtual court में, that is not completely given, right? बहुत सारी problems होती है online court में because it is for the first time that our court is also functioning virtually. तो वहाँ पे technology bottlenecks काफ़ी ज़्यादा high हैं. And litigants have now an option to engage with a local lawyer. अपने चॉइस से वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपियर कर सकते हैं और चाहे तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बोथ इन द लोअर कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट. एंड इंडीड जो वर्चुअल हियरिंग है, दैट मे नॉट बी परफेक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, इज नॉट बीन अ परफेक्ट अल्टरनेटिव, बट सच imperfection मस्ट प्रिफर्ड ओवर द डिनाइल ऑफ राइट एंड एक्सेस टू जस्टिस इटसेल्फ. एक डायरेक्टली किसी को डिनाई कर देना कि अभी आप चले जाइए, पेंडेमिक इज देयर, so this would be not an option. The right option is that the grievances is equally being addressed via virtual mode and some relief is given to an individual, right? So this point of time, it is very important that court has started the virtual hearing and more or less they are providing justice to each and everyone, right? So this can be again important for the case study also. आपसे अगर पूछा जाए, consider you are a district magistrate, case दे दी जाती है, तो आप इस तरह के पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे. Now coming to the MCQs question of the day. So the first question is from quadrilateral security dialogue, a current affairs question. So two statement है इसके आपको बताना है. It is a informal strategic dialogue between India, US, Japan and Australia, and it aims to support free, open, prosperous in Indo-Pacific region. So again, if you know, it is very easy for you. If you don't know, you have to eliminate it and just use your brain. Let me know which among the following is the correct option and how many of you know the correct answer. तो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना, आंसर लिखने के लिए पता है क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपने आंसर ABCD 1
जो भी आपको है क्वेश्चन नंबर 1 के ए है, बी है, सी है, डी है, वो वहाँ पे लिखना है. तो make sure you are participating and practicing this question, which is definitely going to help you in the upcoming prelims examinations. Second question, consider the following states about the Sambar Lake. ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रही है. This is India's largest inland salt lake in the world, and it represents depression in the Aravalli range. So again, geography question, current geography question, which is again very important. So do participate, write your answer in the comment sections. And this is all about the question. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.